panelist from Group C is Manan Sethia from Krishna Public School, Dunda. Can we please clap for him? Good morning, everyone. I'm Manan Sethia from KKS Dunda, class 10. So, before starting, I would like to know one thing. Should I continue in English or Hindi or bilingual? Hindi, English, दोनों? दोनों? Both? Okay. So, India is an agriculturist nation. एक ऐसा देश जहाँ पे more than 50% of the population agriculture में busy रहती है. In one way or another. या तो मैं जाके खेती करूं या फिर उस खेत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचूं, वो पूरी चीजें एग्रीकल्चर के अंदर आती है. सो उसी चीज के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि हर एक फार्मर को पता नहीं रहता कि उसके सॉइल में है क्या, व्हाट न्यूट्रिएंट्स द सॉइल हैज एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. सो टू सॉल्व दैट इशू आई क्रिएटेड मृदा और मल्टीपर्पज रियल टाइम इंटीग्रेटेड डिजिटल एनालाइजर. सो विदाउट मी या फिर मेरे बोलने से पहले व्हाट इफ हम इसके ऐप से पूछे कि मृदा का पर्पस क्या है, व्हाट इज मृदा. आई विल आस्क इन हिंदी क्योंकि ये ऐप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करता है. सो मृदा के बारे में बताओ. रियल टाइम डिजिटल एनालाइजर एक एआई संचालित उपकरण है जो मिट्टी के पीएच, पोषक तत्व, नमी की मात्रा, तापमान को माप सकता है और किसानों को मौसम की खबर भी दे सकता है. So this is the main interface of the app. As you can see, I created the app in MIT App Inventor, which works or runs on the back end of JavaScript. It is a web application used to create apps. And so as you can see, it is a colorful menu with Hindi में लिखे हुए words, which can be changed through the settings. So before getting further into the software, let me introduce the hardware. So as you can see, there are 5 rods here. Blue rods. Each of these comprise of a sensor used to monitor nitrogen, phosphorus, potassium, moisture, temperature, and pH. And you may ask why and how does it do it? क्योंकि ये तो मेटल के rods ही है, कैसे ये उनको sense कर लेंगे? So in soil, the nitrogen, phosphorus, and potassium exists in an organic compound form. For example, nitrogen in nitrates, class 6 में पढ़े थे, rhizobium convert करते हैं nitrogen को nitrate में. Phosphorus in phosphates and potassium in potash. सो उनकी अलग अलग एनर्जी वैल्यू रहती है, अलग अलग चार्ज रहते हैं, अलग अलग सोल्यूबिलिटी रहती है वाटर में. तो उसके हिसाब से वो जो सेंसर है मेरा, वो पार्ट्स पर किलोग्राम 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम डिसाइड करेगा कि उसमें कितना फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम है. सो एंड फॉर द पीएच वैल्यू, द लाइट वन, what it does that the rod has an unbalanced value of hydrogen ions and the soil also has some values of hydrogen or hydroxide ions. तो जो unstable rod है मेरा, वो कैप्चर करता है स्टेबल मीडियम से, जो कि इस केस में है मिट्टी. मिट्टी से वो जो हाइड्रोजन आयंस है, जो हाइड्रोक्साइड आयंस है, उनसे वो पता लगाएगा कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक. That was all. That this Rida is about soil analysis, and it can also help the farmer save money on fertilizers and water, like irrigation methods. So you may all can see that rods के ऊपर में एक grey color का box है. That is the main module of the sensor. एक ऐसा छोटा सा compound Arduino जैसे, जो कि जो values है उसको निकाल के जो screen है जिसमें नमस्ते लिखे हैं, उस पे वो values का output देगा with those speakers. And why do we need speakers? As you can see that मेरा प्रोग्राम ने अभी हिंदी में बताया कि मृदा क्या है, जो कि वो इंग्लिश में भी बता सकता है. और if मैं चाहूँ to input more language models, it can tell it in any indigenous language. That's why we need that screen and that module. And there is also an antenna to connect the module, to connect the device with the internet through satellite connection. क्योंकि अब अगर मैं फॉर एग्जांपल राजनांदगांव के कोई रिमोट एरिया में जाके फार्मिंग करूं, वहां पे तो एयरटेल का 4G या 5G सिम चलेगा नहीं. That's why we need satellite internet. The main question arises, why should farmers use मृदा? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने साल का एक्सपीरियंस जो है, ऐसे वो लोग क्या कर लेंगे इस ऐप को यूज करके. The basic needs कि उनको जो नॉलेज होनी चाहिए उनके सॉइल के बारे में is that उनको पता ही नहीं रहता कि उनके सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट्स और उनकी सॉइल किस क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है. फॉर एग्जांपल कोई फार्मर वेस्ट बंगाल में चावल उगा रहा, बट अननोइंगली उसकी जो सॉइल है वो ज्यादा अच्छे से वीट को उगा सकती है. दैट्स व्हाई दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऐप, to increase the profits of the farmers as they
like only earn 10 or 20% of the profit from their crops. The other 80% or 90% goes to the wholesale sellers or the retail sellers. That's the sad truth about the agriculture industry in our country. So features of weather, as I said, soil analysis, NPK, pH, temperature, and moisture. The others are nutrient detection, weather alerts, language support, as you can see, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं. And weather alerts with an API from the openweatherapi.com. That's a website which gives API or application packages installer that can be used in any app to get the information from that app. That last line says Brita uses scikit-learn method to analyze the nutrients needed by crops and weather preferences. What is scikit-learn method? उसका क्या importance है यहाँ पर? As we are discussing about ML, machine learning and AI, that's the main or the most important part of the device because it converts the data, it takes the data from a not so organized source like for example from the cloud source, then reorganizes it into a readable format or a sorted format with the help of pipeline method. The pipeline method converts the data or the upcoming statements of data into a machine readable format, which then can be plotted on a graph called as clustering or regression, which then decides कि ये जो data है either it belongs to a certain crop or it is a property of a certain crop. It is scikit-learn was devised by Google in late 2007 during their one program, and it is a Python library used to describe or used to define the supervised or unsupervised learning algorithms. This is the main diagram of what scikit-learn method can do. So basically the start, and then it decides whether on the basis of data कि उस चीज में कितना डेटा भरा हुआ है. अगर 1 लाख statements of data है wheat, rice, tomatoes इन सब के बारे में. So it decides to either go in an easier method उस data के size पे जो कि है regression, or it can go to an easier method क्योंकि data कम है तो time भी कम use होगा. So classification. And you may also see clustering and dimensionality reduction. Clustering is done when there are more than tens or hundreds of data fields ताकि जो cluster बन सके. Cluster basically graph में point of areas बना लेता है जो कि enclosed data उस enclosed data के अंदर हर एक crop की उस particular crops की data रहती है. That's it. And dimensionality reduction is the simplification of data into readable. As you can see, steps to implement scikit-learn. So basically, I will give an example. For example, I have wheat and price data in an unorganized format, and this will just organize it into a readable format, जो कि app में है screenshot in the next upcoming. So how did I get this idea? I discussed with farmers कि उनकी क्या क्या problems होती है, वो कैसे farming करते हैं. I searched on the internet about this idea and found out that AI can be implemented in the field of agriculture. This is the main interface of the app, the main menu, the main assistant through which I called the function to say the details about my app, the app जो कि उसने हिंदी में बोला. The main prompt requirement. So this is the main function, main screen, which uses this scikit-learn method to understand or see which data is of which crop. जो कि अभी इसने wheat और rice का अलग-अलग कर दिया, change कर दिया इसमें. This is the मिट्टी का परीक्षण करे. I hope so कि किसी को पता नहीं होगा समन्वयती का मतलब. इतनी प्योर हिंदी तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ी, लेकिन Google Translator है तो चीजें possible है. So last synced 1 hour ago because it's a fake screen. Of course, I don't have a sensor with me right now. So it is showing कि वो screen कैसे दिखेगी if मेरे पास एक Bluetooth sensor होके वो sensor if मेरे phone पे चीजों को transfer करता है. Then the weather news used from the Open Weather API, latitude, longitude, current weather, temperature, humidity, and wind speed. And the settings where you can choose the language, the city in which you are. If you don't have a location GPS sensor, you can turn the narrator on or off, which if you when click a button, it will say the text on that button. जैसे भी main menu है, so it will say मुख्य menu or main menu according to the language set on the application. This is the about section, whatever it is. And this is the emergency phone number. I can show the live demo of it, like a current phone number.
नंबर पकड़ दबाएं। The helpline center of the Kisan Call Center. That's the number. Thank you.